Time, and let's quickly go across to the other question that start with here on this very special broadcast. Do you think, the question is, do you think Muslim men should have the right to marry up to 4 women? Do you really think Muslim men should have the right to marry up to 4 women? Polygamy, should it be allowed? Let's look at what the numbers suggest. The numbers very clearly say no. 76.5% of the respondents say no. 17.4% of the respondents say yes. 6% odd are sitting on the fence. This is the overall number of the sample, 8,035 women. Let's go. Questions 1, 2 and 3 to Zaka as he breaks it down based on the nature of the respondents. Yes, yeah, Zaka. I think this question about whether Muslim men should be allowed to marry up to 4 wives. They are legally allowed, as per Muslim personal law, to have up to 4 wives. I think this is one of the most repulsive sort of practices, because if you look at modern day marriages across, irrespective of religion, caste, creed, etc., the concept has now wired down to one husband, one wife, or one person, one spouse. Basically, the foundational the foundation of modern day marriage is built on fidelity. So having 4 wives is something that is a repulsive practice. But there again, if you were to break down amongst graduates, you said, 76.5% have opposed the idea of polygamy or having multiple spouses, multiple wives. In this case, if amongst graduates, it goes up by another additional 2 percentage points, from 76.5 to 78.5. But amongst graduate respondents, very, very few are supportive of this practice. Just about 5% saying that they don't know or can't say. Again, if you look at age-wise breakup, in the younger demographic, 18 to 44 demographic, again, that number has gone up by 1.5% from 76.5 to 78. Here again, the percentage of people who are sitting on the fence and not taking a position against polygamy is much lesser compared to the overall respondents. The older people, again, there is almost a 5%, in fact 5.3 percentage difference between the total respondents and the older people. So older people seem to be favoring the idea of having multiple wives for Muslim men, but amongst younger people and graduates, it is far less. So I think, again, it comes back to, like I said, if for everyone, for Hindus, Christians, Parsis, Sikhs, the whole idea of marriage in this day and age has come down to, one husband, one wife, or having one partner. It is built on the concept of fidelity. Then having multiple wives, I think, is a repulsive. The more educated, idea. the more informed you are, the more nuanced your understanding. Just quickly, Zaka, if you were to go to question 2, does this response mirror the marriage age of 21? Does it the response mirror the question number 3 in fact, about polygamy? If you were to look at the idea of raising the marriage age both for men and for women, in fact, the support there is much higher. In the previous segment, you saw 76, it became 78% in the case of graduates. In this case, it is 82%. It's a good 4% more. Similarly, here amongst the younger demographic as well, it's 80%. It's a couple of percentage points more than the revulsion towards polygamy. But when it comes to supporting 21 as the age of marriage, both for men and women, I think, again, the support is much more stronger in the younger demographic as well as in the more educated demographic. And I think it's keeping with marriages across, that in this day and age, younger people are wanting to postpone marriage, whether it is for educational reasons, to find a job, to become financially independent, and even, the whole process of childbearing is being pushed further and further ahead. And I think if you look at younger people and graduates, the idea or the affirmative to raising the marriage age to 21 seems to be far more than in the general sample response. No, absolutely. And the more educated, the younger they are, the more informed they are. And of course, they are also driving the opinion, ladies and gentlemen. Joining us now is Sushil Modi ji, Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Law. It's also BJP MP. Sushil Modi ji, namaste. News 18 की तरफ से जो UCC को लेकर सर्वे किया गया है, उसमें मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर UCC को सपोर्ट किया है. आप क्या कहेंगे हमारी इस पहल पर और इस बात पर कि मुस्लिम महिलाएं आगे आकर कह रही हैं कि देश में एक कॉमन कोड लाइए?
जो महिलाएं हैं, चाहे वो हिंदू समाज की हों या मुस्लिम समाज की, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा और इसलिए पुरुष हमेशा विरोध करते हैं, महिलाएं कभी विरोध नहीं करती हैं। जब हिंदू कोड बिल भी आ रहा था 56-55 में, तो हिंदू पुरुषों ने विरोध किया था। तो जिस प्रकार लेकिन फिर भी हिंदू कोड बिल आया और हिंदू समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। लेकिन 75 साल हो गया, आज तक मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी प्रकार को कोई सुधार नहीं हुआ। ये तो महिलाओं के हित में है, लेकिन इसका विरोध पुरुष करेंगे, क्योंकि पुरुषों को लगता है कि उनका एकाधिकार खत्म हो जाएगा। उनको जो डाइवोर्स में अनइक्वल राइट्स मिले हुए थे, जो पॉलीगेमी का अधिकार है, मेंटेनेंस नहीं देने की जो बात कही जाती है, प्रॉपर्टी राइट्स का जो मामला है, तो इसलिए जब दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों के अंदर एक ही सिविल लॉ जारी है या लागू है, तो भारत में कोई अलग अलग सिविल लॉ होने का कोई तो औचित्य नहीं था। और आज आपने सर्वे करके सबों की आंखें खोल दी, क्योंकि हम लोग भी थोड़े चिंतित है कि पता नहीं सर्वे में क्या रिपोर्ट आएगी। लेकिन आपकी जो सर्वे रिपोर्ट आज आई है, ये तो ओवरवेलमिंगली जो सभी जो सिविल लॉ के मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर बहुसंख्यक महिलाओं ने सुधार की दिशा में और समर्थन किया है। तो ये दिखलाता है कि अब मुस्लिम समाज भी रिफॉर्म के लिए तैयार है। मेरे चंद मुट्ठी भर जो मेल डोमिनेटेड लोग हैं, जो मेल हैं, वो विरोध कर रहे हों, लेकिन आम मुस्लिम समाज भी सिविल लॉ में चेंजेस के पक्ष में है। जी सुशील जी, इफ आई मे आस्क यू, AIMPLB की तरफ से विरोध आया है, RJD बिहार में कह चुकी है कि वी आर अगेंस्ट इट, DMK ने कहा है इट्स आवर पॉलिसी, वी आर गोइंग टू बी अगेंस्ट इट। आपको लगता है कि ये मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ये कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जब कोई ड्राफ्ट आ जाएगा पब्लिक में, तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं उनको भी समर्थन करना पड़ेगा। आप किस ग्राउंड पर विरोध कर रहे हैं? क्या अगर पॉलीगेमी हो कि मोनोगेमी हो, एक पति हो, एक पत्नी हो कि एक से ज्यादा पत्नी हो, किस आधार पर कोई इसका विरोध करेगा? 3 तलाक का किस आधार पर कोई समर्थन करेगा? तो राजनीतिक दल भी आज कई जो विरोध कर रहे हैं, कुछ तो सारी चीजों के आने के बाद भी विरोध करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार लॉ कमीशन के द्वारा जब ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आएगा, तो जो थोड़ा बहुत भ्रम पैदा करने का प्रयास हो रहा है, तो जनता के दबाव में जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको भी कॉमन सिविल लॉ का समर्थन करना पड़ेगा। तो अभी तो उनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, इसलिए भड़का देते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम महिलाएं खुलकर सामने आ रही हैं और वो अगर कहते हैं कि सिविल लॉ में बदलाव आना चाहिए, तो फिर तो राजनीतिक दलों के विरोध का क्या अर्थ है? जो हमारे विरोधी वो तो हमेशा हमारा विरोध करेंगे, और जो हमारे समर्थन में भी जो लोग हैं उनके बीच में अगर कोई गलतफहमियां हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अंततः जो है पूरा सारे अधिकांश पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन इस मुद्दे पर मिलेगा। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता है। कोई भी जो महिलाओं के साथ जो लैंगिक अन्याय हो रहा है, जो एक सेक्स का जो डिस्क्रिमिनेशन है महिलाओं के प्रति, कौन उसका समर्थन करेगा आज के युग में? 75 साल पहले की बात अलग थी, लेकिन अब समाज बहुत आगे बढ़ गया। और जब दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में भी एक प्रकार का कानून है और ये प्रथाएं वहां भी नहीं, भले कानून किसी भी प्रकार का हो, तो मुझे लगता है कि भारत में भी जब एक बार ड्राफ्ट आ जाएगा तो बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। बट आपको